है ना? Okay. So hey guys, this is Vimal and you are watching BMD Vimal Roy. Guys, in this class, I am going to check my student that how good and intelligent actually they are at English grammar. So I can say that it is a kind of test. So guys, without any further delay, let's get started. So dear students, आप सभी को ये जो सेंटेंसेस है इनको करेक्ट करना है. यदि सेंटेंसेस करेक्ट है तो फिर बोलना है कि हाँ ये करेक्ट है. कुछ यदि सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक्स है तो आपको क्या करना है, उसको करेक्ट करना है. डू यू थिंक कि आप कर पाओगे? यस. आर यू श्योर? यस. शैल आई आस्क? यस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल रूपम. प्लीज कम ओवर हियर. Stand here. Rupam, read sentence number first. I said. I is? Said. Do you think, Rupam, this sentence is right? No, I don't think this sentence is right. Can you correct this sentence? Yes. Are you sure? Yes. Correct it then. I am sad. I am? Sad. I am sad. It means what? मैं उदास हूँ. Do you audience think she is right? Yes. Just give a big clap for her. Now, I would like to call Golu. Please come over here. Golu, read sentence number second. You is sad. You is? Mad. You is? Mad. Golu, do you think this sentence is right? No, I don't think this sentence is right. Can you write the sentence? Yes. Write it then. You are you are mad. You are? Mad. Why do you say sad again and again? Okay, you are? Mad. It means what? तुम बीमार हो. पागल हो? No. क्या हो? तुम पागल हो. तुम पागल हो. तुम इतना सोच क्यों रहे हो फिर? क्या होगा बताओ जरा. तुम पागल हो. तुम पागल हो. Do you audience think he is right? Yes. Just give a big clap for him. Okay, now I would like to call Naina. Now I would like to call Naina. Please come over here. Okay, Naina, read third sentence. I am go. I am. Go. What do you think? This sentence is right? No, this sentence is not right. Okay. Can you correct this sentence? Yes. Please correct. I am going. I am. Going. कौन सा टेंस है ये? Present continuous. इसका क्या मतलब होगा? मैं जा रहा हूँ. Very nice. Just give a clap for her. Next, I would like to call Gaurav. Please come over here. Gaurav, read sentence number 4. Do you eating mango? Do you eating? Mango. Do you think the sentence is right? No, this sentence is not right. Okay. Can you correct this sentence? Yeah. Please correct. Are you eating mango? Are you eating? Mango. क्या इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता है? क्या इसे अलग तरीके से भी करेक्ट किया जा सकता है? Yeah. प्लीज करेक्ट इट. यहाँ पे डू यू ईटिंग मैंगो में से ईटिंग के बाद आईएनजी को हटा देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. जैसे डू यू ईट मैंगो. तो डू यू ईट मैंगो का क्या मतलब हुआ? क्या तुम आम खाते हो? और आपने पहले क्या बोला था? आर यू ईटिंग मैंगो. उसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम आम खा रहे हो? डू यू जस्ट थिंक ही इज राइट? यस. जस्ट गिव अ क्लैप फॉर हिम. एक्सीलेंट. नाउ I would like to call Karan. Please come over here. Karan, read sentence number 5. Are you go to market? Are you? Go to market. Do you think this sentence is right? No, I don't think this sentence is right. Can you correct this sentence? Yes. Please correct it. Are you going to market? Are you going to? Market. कौन सा sentence है ये? कौन सा tense है ये? ये present continuous. क्या मतलब हुआ इसका? क्या तुम बाजार जा रहे हो? Do you just think he is right? Yes. Just give a clap for him. Please correct it. Now I would like to call Ranjan. Please come over here. Ranjan, read sentence number 6. Does Ravi has 500 rupees? Hold this mic. Do you think this sentence is right? No, I don't think this sentence is right. Can you correct this sentence? Yes. Please correct it. Does Ravi have 500 rupees? Does Ravi have? 500 rupees. What does it mean?
क्या रवि के पास 500 रुपया है? Do you think this is right? Yes. Just give me a clap for it. Please have a seat. Now I would like to call. Now I would like to call Naina. Please come over here. Naina, read sentence number 7. I am at home since morning. Do you think the sentence is right? No, this sentence is not right. Okay, can you correct this sentence? Yes. Please correct it. I have been at home since morning. I have been at home since morning. Yes. क्या मतलब हुआ उसका? मैं सुबह से घर पर हूँ। आपने am को have been में बदल दिया, क्यों? क्योंकि जब समय से की बात आता है तो is am are चेंज होता है हैज बीन या हैव बीन में। Have been में यहाँ पर कहाँ है समय से की बात? Since morning मतलब सुबह से। ओके, तो क्या बताया आपने इसका हिंदी? मैं सुबह से घर पर हूँ। मैं सुबह से घर पर हूँ। Do you audience think she is right? Yes. Just give me a clap for her. Please have a seat. Now I would like to call Arupam. Please come over here. Read sentence number 8. I was ill for 2 months. I was ill for 2 months. Do you think, Rupam, this is right sentence? No, I don't think this is right sentence. Can you correct this sentence? Yes. Please correct it. I had been ill for 2 months. I had been ill for 2 months. क्या मतलब हुआ उसका? मैं 2 महीनों से बीमार थी। ओके, आपने was को डायरेक्ट had been में चेंज कर दिया, क्यों? जब इस समय की बात आते हैं समय से की बात आते हैं तो वाज वर्ड को हटाकर हैड बीन में चेंज कर देते हैं। जब भी समय से की बात हो तो हम वाज वर्ड को चेंज करके हैड बीन में चेंज कर देंगे। वाज वर्ड को हैड बीन में चेंज कर देंगे। डू यू ऑडियंस थिंक शी इज राइट? क्या होता है आपने इसका हिंदी? मैं 2 महीनों से बीमार थी। वेरी नाइस, जस्ट गिव अ क्लैप फॉर हर। नाउ हाउ मेनी सेंटेंसेस? ओके, देयर आर 2 sentences. Now there are 2 sentences. I would like to call Karan. Come. Read sentence number 9. I need to going to market. I need to going to market. Do you Karan think this is right sentence? No, I don't think this sentence is right. Can you correct this sentence? Yes. Are you sure you can correct? Yes. Please correct it. I need to go to market. I need to go to. Market. Do you think this is right sentence? Yes. I need to go to market. हाँ. क्या मतलब है उसका? मुझे बाजार जाने की जरूरत है। मुझे बाजार जाने की जरूरत है। आपने क्या किया यहाँ पर? गोइंग को क्या कर दिया? गोइंग को गो बना दिया, आईएनजी हटा दिया। आईएनजी हटा दिया। क्यों हटा दिया आपने आईएनजी? क्योंकि वह टू के बाद आईएनजी नहीं लगता। टू के बाद आईएनजी नहीं लगता है। डू यू ऑडियंस थिंक ही इज राइट? यस। आर यू श्योर? यस। लेट्स गिव अ बिग क्लैप फॉर एमजे। प्लीज ओके, नाउ देयर इज ओनली 1 sentence. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल गोलू. कम. Okay, Golu, read sentence number 10. I will give you money tomorrow. I will give you money Tomorrow. ढूंढो कहाँ पे गलती है इसमें? मैं कहीं नहीं। Are you sure? क्या मतलब है उसका? मैं तुम्हें कल पैसे दूंगा। मैं तुम्हें कल पैसे दूंगा। Are you sure कि सही है? हाँ। इस सभी से पूछूं? आप सभी को क्या लगता है सही बोला है? Yes. Sure? Yes. ब्लॉक कर दिया जाए? Yes. गोलू, आप 5 करोड़ रुपया जीत गए हैं। ताली बजाओ के लिए। Very nice. So guys, that's all in this class. I hope guys would have enjoyed it. If you guys like this video, don't forget to like, subscribe and share. तो क्या बोलना है? So guys, if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you so much guys.